Hello kids, how are you all? I hope you are doing well. Today we discuss chapters air. Here is some warm-up questions. Look at these pictures, circle the objects which need air to grow. So you can do it by yourself as you know that about these things. Here is, let's know about what is air, components of air, properties of air, uses of air, air pollution causes, effects and preventive measures. So these are some topics we will discuss in this chapter. Here is what is air. Air is all around us and it is one of the most important things in our lives. But how much do we actually know about air? So बच्चे air क्या है हमारे आसपास होती है और सबसे important thing है हमारी lives में. Take a last deep breath. Inhale, exhale. Do it again. Inhale, exhale. Let's think about what exactly is happening in our body that is allowing us to breathe. Well, when we inhale or breathe in, our lungs fill up with oxygen that is passed to our bloodstream. Air is a gas that provides us with oxygen. Without air, living things would be unable to survive, including plants, animals and human beings. So बच्चे जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं दैट मीन्स हम एयर को इनहेल कर रहे हैं और जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स किससे फिल हो जाते हैं ऑक्सीजन से. ओके लेकिन जो एयर है वो हमारे लिए नहीं बच्चे, वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके और जो एयर होती है उसमें कौन सी गैस बच्चा होती है, प्रेजेंट होती है, दैट इज ऑक्सीजन. You cannot see air, but it is all around us. Surrounding us is a thick blanket of air called atmosphere. बच्चे आप एयर को टच नहीं कर सकते लेकिन हमारे जो आसपास एक सराउंडिंग में एक ब्लैंकेट बना हुआ है एयर का और उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. Without the atmosphere, there would be no life on earth. The atmosphere is the air that plants and animals breathe to survive. तो आपको जो एटमॉस्फेयर है बच्चा अगर वो नहीं होगा अर्थ पे कोई लाइफ नहीं होगी और एटमॉस्फेयर की हेल्प से ही प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं बच्चा, ब्रीथ करते हैं. Here is what does air contain? Air is a mixture of gases. It contains the following gases. एयर क्या है बच्चा, मिक्सचर है गैसेस का. और अब देखो एयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं. द फर्स्ट वन इज more than 3/4 of air is gas called nitrogen, that is 78%. About 1/5 is the gas oxygen, 21%. Oxygen is needed by animals to breathe and carbon dioxide is used by plants in photosynthesis. So बच्चे आपकी जो एयर है, एयर में जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है गैस दैट इज नाइट्रोजन 78% और 1/5 ऑक्सीजन दैट इज 21%. और ऑक्सीजन और एनिमल्स और प्लांट्स सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन जो है हम ऑक्सीजन से ब्रीथ करते हैं. ओके There are lots of other gases that are part of the atmosphere but in much smaller amounts. These includes argon, carbon dioxide, neon, helium, hydrogen and more. बच्चे और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में बट वो बहुत कम अमाउंट में होती हैं. जैसे आर्गन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है. ओके Beside the gases, air contains water vapor, dust and smoke. The amount of these varies from place to place and from time to time. आपकी एयर में बच्चे गैसेस के साथ साथ वाटर वेपर भी होती है, डस्ट भी होता है, स्मोक भी होता है बट वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ है, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम. लुक हियर, गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन, all other argon, carbon dioxide in blue color and oxygen in green color. Do you know? It is estimated that indoor air is 5 times more polluted than outdoor air. So as the temperature rise, let the fresh air in. So बच्चे जो आपकी इंडोर एयर होती है वो ज्यादा पॉल्यूटेड होती है इन कंपैरिजन ऑफ आउटडोर एयर. ओके इसलिए जब टेम्परेचर चेंज हो तो आपको जो फ्रेश हवा है उसको अंदर आने देना चाहिए. ओके एयर इज अ मैटर. Matter is anything that has mass and takes up space. So in order to prove that air is matter, we need to prove that air has mass and takes up space, which we shall find in the experiments given later. So बच्चे एयर क्या है, मैटर है. मैटर क्या होता है, जो जिसका कोई स्पेस होता है या जो कोई मास रखता है. ओके हमारी एयर में मास भी होता है और स्पेस भी लेती है. ओके बट ये हम किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू बाद में जो है प्रूव करेंगे. ओके हियर इज ह्यूमिडिटी.
The amount of water vapor in air is called humidity. It varies according to the location of a place and the weather. A place near the sea has greater humidity than a place away from the sea. Mumbai is more humid than Delhi as it's near to the sea. तो बच्चे ह्यूमिडिटी क्या होती है? जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है आपकी एयर में, ठीक है, वो वेरी करती है लोकेशन, प्लेस टू प्लेस और वेदर। ओके, जैसे दिल्ली में ह्यूमिडिटी कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ मुंबई। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज properties of air. Air occupies space. Apparatus required: glass, ball of water, cotton wool. Okay student, look at these pictures. You need cotton wool, water, air, cotton and water. These are some pictures. Look at these pictures. Step 1. Press a piece of cotton wool into the bottom of the glass. Put the glass upside down into the ball of water. Take the glass out. The cotton wool is dry. So, बच्चे आपने क्या करना है? ग्लास को जो है ऐसे अप साइड से एकदम डाउन करना है वाटर बॉल में, और आपको जैसे आप ग्लास बाहर लेकर आएंगे तो जो आपका कॉटन वूल है वो क्या होगा? ड्राई ही होगा। नाउ tilt the glass slightly and put it into the ball of water. Air bubbles are seen and water goes into the air. अब बच्चे आप क्या करो? दोबारा से उसको डाउन करो वाटर बॉल में और उसको टिल्ट कर दो। अब आपको कुछ बबल्स दिखाई देंगे और क्या होगा? वाटर जो है आपका एंटर कर जाएगा ग्लास में। ये क्या दिखाता है? Here is observation and result. In step 2, the cotton wool was dry because there was air in the glass and water could not go in. So step 2 के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है बच्चा कि जो हमारा वाटर है, जो हमारी एयर है वो प्रेजेंट थी ग्लास में, इसलिए वाटर अंदर नहीं गया। ओके, इन स्टेप 3 we see air bubbles. हमने क्या देखा बच्चा? एयर बबल्स, which means air escapes out and water goes in the glass. This shows that air occupies space. So बच्चे ये क्या शो करता है कि एयर ऑक्यूपाई करती है स्पेस को। नाउ एयर हैज वेट. Apparatus required: 2 balloons, 1 meter long stick, a string tied at the center. So these are the things you need to perform this activity. Here is steps. Fill the 2 balloons with equal amount of air approach. Look at the first picture when the yellow balloon is deflated. Now tie each balloon to each end of a stick respectively. Now remove air from one of the balloon. अब आपने क्या करना है? पहले बच्चा दोनों बैलून्स को इक्वल एयर से फिल करना है, फिर आपको एक बैलून को डिफ्लेटेड, दैट मींस उसकी एयर को क्या करना है? रिमूव कर देना है। नाउ लेट्स सी, लुक एट द सेकंड फिगर. हियर इज ब्लू balloon is heavier than yellow. Observations and result. In step 2, the stick is in horizontal position. In step 3, we observe that side of the stick with air-filled balloon goes down, thus proving that air has weight. तो इससे क्या पता चलेगा बच्चे आपको कि एयर के पास वेट भी होता है। ओके, here is air is colorless. Air is invisible. It has no color. If you see that air is colored, it's because it is full of dust, smoke or pollution. बच्चे एयर इनविजिबल होती है, कलरलेस होती है, और अगर आपको लगता है कि एयर का कलर है तो वो किसकी वजह से होता है? डस्ट होती है, स्मोक होता है और पॉल्यूशन भी। ओके, हियर इज air does not have definite shape or volume. If you blow air into a balloon, it takes the shape of the balloon. If you now let the air out in a room, it will spread all over the room. It now takes up more space than it did. This shows that air does not have definite shape or volume. So बच्चे क्या है कि ना तो आपके एयर का डेफिनेट शेप होता है और ना ही वॉल्यूम। आप एयर को जहां रखते हो वो वही क्या हो जाती है? स्प्रेड हो जाती है। Here is air takes up space. You can prove this by blowing up a balloon. The balloon expands because you are putting something into the balloon. That means this air takes up space. अब बच्चे आपको बताना है air takes up space. अब आप किसी बलून को फिल करो, उसको ब्लो कर दो तो क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? उसकी शेप चेंज हो जाएगी, वो बड़ा हो जाएगा, और ये हमें क्या शो करता है कि एयर का स्पेस होता है। सो द मोर एयर यू पुट इनटू द बलून, द मोर स्पेस इट टेक्स अप. तो जैसे जैसे आप उसमें एयर को फिल करेंगे वैसे वैसे उसका शेप जो है और बड़ा होता जाएगा. When you use a pump to blow up a football, you put air into it. This air takes up space, which is why the football expands. So बच्चे जब आप एयर फिल करते हैं फुटबॉल में वो क्या हो जाती है? एक्सपेंड हो जाती है. और ये क्या शो कर रहा है आपको कि एयर का स्पेस होता है. ओके, here is air has mass. Place an empty balloon on a scale and weight it.
Take the same balloon and inflate it. Weight it again. What do you see? तो आपने क्या करना है, एक बलून लेना है. फर्स्ट वो नॉर्मल बलून, आप उसका वेट करेंगे, फिर आप उस बलून को एयर से फिल करेंगे, दोबारा उसका वेट करेंगे. A really clear way to show this is to make a balance with a stick or coat hanger suspended by a string in the middle. तो आपने क्या करना है, एक आपने बैलेंस बनाना है और एक हॉरिजॉन्टल स्टिक पे tie an empty balloon on each side to prove the weight the same. So आपने फर्स्ट क्या करना है, empty balloons को क्या करना है बच्चे, दोनों साइड पे टाई कर देना और आपने देखना है कि उनका वेट सेम. Inflate one balloon and hang it again. अब दोबारा एक बलून को लो, उसमें एयर फिल करो, उसको हैंग करो. That side of the balance will be heavier. So जिस साइड आपने एयर फिल्ड बलून लगाया वो साइड क्या हो जाएगी बच्चे, हैवी हो जाएगी. If air had no mass, there would have been no change. अगर एयर का कोई मास नहीं है तो वहां पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए था, बट हुआ, दैट मीन्स एयर हैज मास. नाउ एयर exerts pressure. Fill the glass with water up to the brim. आपने क्या करना है, वाटर को फिल करना है up to the brim. Cover it with a cardboard piece and turn the glass upside down. आपने उसके किसके साथ कवर करना है, कार्डबोर्ड पीस के साथ. और अब अपने ग्लास को उल्टा कर देना. Slowly remove your hand. The cardboard does not fall and water stays in the glass. अब क्या होगा, आप धीरे से अपने हैंड को रिमूव करो तो जो कार्डबोर्ड है बच्चे वो नीचे नहीं गिरेगा और वाटर भी आपके ग्लास में एज इट रहेगा. Air pushes the cardboard up and prevents it from falling. This experiment shows that air exerts pressure. अब क्या है बच्चे, जो कार्डबोर्ड है उसको अपसाइड कौन प्रेशर डाल रहा है, एयर, और वो नहीं गिरेगा. इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट से हम बोल सकते हैं कि एयर exerts pressure. Here is uses of air. Air is needed for burning. Air supports burning or combustion. The oxygen present in air is essential for burning. Light the candle with the help of matchstick and fix it on a plate. What you have to do? अपने ऑक्सीजन की अब आप क्या शो करेंगे कि बर्निंग के लिए हमें एयर की नीड होती है और मोस्टली हमें नीड किसकी होती है बच्चा, ऑक्सीजन की. अब आपने एक कैंडल को लाइट करना है, जलाना है और उसे क्या करना है, फिक्स कर देना है एक प्लेट में. Now cover the burning candle with a glass. You will notice that candle goes off in a few seconds. आपने क्या करना है, कैंडल को कवर कर देना है ग्लास से और कुछ सेकंड्स के बाद क्या होगी, ग्लास में जो कैंडल आपने कवर किया है वो कैंडल बंद हो जाएगी. Why? The candle flame was there for some time after putting the glass, as there was air in the glass. Once the air is used up, the candle cannot continue burning. अब क्या होगा, थोड़ी बहुत जो हवा आपके ग्लास में थी उसको कैंडल यूज करेगी बच्चा और उसके बाद वो बंद हो जाएगी. The part of air used in burning is oxygen and carbon dioxide was given out. और जो आपकी पार्ट यूज होता है एयर का, दैट इज ऑक्सीजन, और जो आपकी बर्निंग के बाद गैस रिलीज होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. Here is air is needed for breathing. Air contains oxygen, which is essential for life. All living things respire by breathing in air. The air we breathe in is inhaled air. The air we breathe out is exhaled air. तो बच्चे एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है. हम ब्रीथ इन करते हैं, दैट इज इनहेल्ड एयर, और जब ब्रीथ आउट करते हैं दैट इज एक्सहेल्ड एयर. डू यू नो एन एवरेज पर्सन इनहेल्स 16 kg ऑफ एयर इन वन डे. सो आप एक नॉर्मल पर्सन कितनी ऑक्सीजन यूज कर लेता है बच्चे एक दिन में, 16 kg. Here is air is needed by plants. Carbon dioxide of the air is used by the plants for making food in the process of photosynthesis. So जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन यूज करते हैं बच्चा, प्लांट्स. किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में. The nitrogen present in air is essential for the growth of plants. Plants take in nitrogen directly from the air or from the soil. So जो बच्चे प्लांट्स हैं वो किसका यूज करते हैं, आपके नाइट्रोजन का भी, क्योंकि उनकी ग्रोथ में बहुत जरूरी होती है. वो प्लांट्स एयर से भी लेते हैं और सॉइल से भी. Okay, here is we have check and mate, as we already read about these things, so you can do it by yourself. Now we have air pollution. Air pollution occurs when gases, dust, smoke, or odor get into the air and make it unclean. Air pollution is unsafe for humans and animals to breathe and for plants to live with. तो बच्चे एयर पोल्यूशन क्या होता है, जब कोई गैस मिक्स हो जाए एयर में, कोई डस्ट, स्मोक या कोई स्मेल, और वो सब क्या करते हैं, वो एयर को अनक्लीन बना देते हैं. और जो पोल्यूटेड एयर है वो सबके लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स, प्लांट्स, सबके लिए. Here is air pollutants. They are the substance which pollute the air.
सो बच्चे पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो किसी भी चीज को पोल्यूटेड करते हैं. अब एयर पोल्यूटेंट दैट मीन्स जो एयर को पोल्यूट करते हैं. सम ऑफ द कॉमन पोल्यूटेंट्स आर डस्ट, soot, ash, carbon monoxide, excess of carbon dioxide, sulfur dioxide, oxides of nitrogens, hydrocarbons, chlorofluorocarbons, that is CFC, lead compounds, asbestos dust, cement dust, pollens and radioactive rays. These are the pollutants जो आपकी एयर को क्या करते हैं बच्चा? पोल्यूट करते हैं. Okay, here is, do you know, in December 1952, air pollution in London created fatal smoke that immediately killed 4,000 people and then 8,000 more in the following weeks. Burning of coal was the main cause. So बच्चे क्या हुआ? एक इंसिडेंट हुई थी 1952 में, that is of air pollution. क्या हुआ? एकदम fatal smoke हुआ लंदन में और immediately 4,000 लोग जो है डेड हो गए और विद इन वीक 8,000 लोगों की डेथ हो गई. और रीजन क्या था? जो आपका कोयला होता है उसको जलाया गया था, उसकी वजह से आपका एयर पोल्यूशन हुआ. ओके, हियर इज कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन. स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस containing particles of dust and heavy metals are released by the industries. So हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं बच्चा वो स्मोक और हार्मफुल गैसेस को रिलीज करती हैं in the environment. Harmful gases and chemicals are also released by the vehicles into the air. So जो हमारे व्हीकल्स हैं उनसे भी हार्मफुल गैसेस और केमिकल्स रिलीज होते हैं बच्चा एयर में. Here is bursting of crackers also give out harmful smoke and make the air unhealthy for breathing. और जब हम क्रैकर्स को बर्न करते हैं उससे भी बहुत हार्मफुल स्मोक एयर में क्या होता है? मिक्स होता है और वो एयर को अनहेल्दी कर देता है. Here is effects of air pollution. Causes depletion of ozone layer due to which ultraviolet radiation can reach the earth and cause skin cancer, damage to eyes and immune system. So बच्चे क्या है? जो हमारी ओजोन लेयर है उसको क्या कर रही है? वो खराब कर रहा है एयर पोल्यूशन की वजह से. वो क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है, दैट मीन्स कम हो रही है और उसकी वजह से जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो अर्थ पे डायरेक्टली आ रही है जिसकी वजह से स्किन कैंसर होता है, डैमेज आइज का हो सकता है और आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है. इट अफेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉजिंग breathing difficulties and disease such as bronchitis, asthma, lung cancer, tuberculosis and pneumonia. So these are some disease. ये भी किसकी वजह से होती है बच्चा? एयर पोल्यूशन की वजह से. It causes greenhouse effect and global warming which leads to excessive heating of Earth's atmosphere. और बच्चे क्या कॉज करते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. इसकी वजह से क्या हो सकता है? एक्सेसिव हीट हो गई है, हमारा टेम्परेचर जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. Here is preventive measures. Use of public transport and try to make use of carpooling. Automobiles should be properly maintained and less polluting fuels such as CNGs should be used. So बच्चे हमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए और ऑटोमोबाइल्स को मेंटेन रखना चाहिए और जो हमारा फ्यूल जैसे CNG है वो लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है तो उसका हमें यूज करना चाहिए. Here is tall chimneys should be installed at factories. Industries should be located far away from the residential area. Better designed equipment and smokeless fuels should be used in homes and industry. So बच्चे जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी चिमनी जो है वो बहुत टॉल होनी चाहिए और जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें रेजिडेंटल एरिया से थोड़ा दूर जो है हमें क्या करना चाहिए? सेटअप करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी चीजें यूज करें कि स्मोकलेस फ्यूल हो, अच्छे हमारे इक्विपमेंट्स हो. उससे क्या होगा? आपका एयर पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा. Here is renewable and non-polluting sources of energy like solar energy, wind energy, etc. should be used. So हमें renewable and non-polluting source of energy use करने चाहिए जैसे solar energy and wind energy. More trees should be planted along roadside and houses. आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को लगाना चाहिए आपके रोड साइड पे और घरों में. Here is we have chicken meat. As already we read about these things, so you can do it by yourself. What we learn in this chapter, now we will discuss it in a nutshell. Here is, air is all around us and is very essential for all living beings. Air हमारे आसपास है और हम सबके लिए बहुत essential है. Here is, air is a mixture of various gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, hydrogen, helium, water vapor, smoke, dust particle, etc. So इन सब का मिक्सचर कौन है बच्चा? एयर. Air occupies space and has weight
therefore air is a matter. एयर ऑक्यूपाई करती है स्पेस को और एयर का वेट भी होता है, इसलिए एयर क्या है बच्चा, मैटर है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. और जो वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, दैट इज ह्यूमिडिटी. एयर इज कलरलेस, डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, वॉल्यूम एंड कैन एक्सर्ट प्रेशर. तो एयर कलरलेस होती है, डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होते और वो प्रेशर भी एक्सर्ट करती है. यूजेस ऑफ एयर आर लिविंग things need air to stay alive. Uses of air are living things need air to stay alive. Air is used for burning and is needed by plants and for the process of photosynthesis. तो बच्चे ये सब क्या है, एयर की वजह से हमारे यूज जो एयर का होता है हमारे एनवायरमेंट. Air pollution is caused by smoke and harmful gases released by vehicles and factories. Burning of leaves and harmful gases form garbage dumps. So ये सब क्या है बच्चा, आपका एयर पोल्यूशन के होने के रीजंस हैं. एयर पोल्यूशन लेड टू स्किन कैंसर, ब्रोनिसिस, एस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा. इट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. सो इससे क्या हो सकता है, एयर पोल्यूशन से आपको स्किन कैंसर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है. ओके, हियर इज प्लांटिंग मोर ट्रीज, use of less polluting fuels, making use of carpooling, use of solar and wind energy can help in reducing air pollution. These are some things we can do for reduction in air pollution. Here is some keywords. Condensation, the conversion of a vapor or a gas to a liquid. Invisible, unable to be seen. Combustion, burning. Depletion, weaken. Greenhouse effect, the problem caused by increased quantity of gases such as carbon dioxide in the air. These gases trap the heat from the sun and causes a gradual rise in temperature of the Earth's atmosphere. बच्चा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि हमारी जो एयर है उसमें गैसेस की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड आपके सन से क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है और उसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. ओके, हियर इज ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर. और अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रीज होने को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग. हियर इज CNG, compressed natural gas. Thank you students, we will meet again in the next step.